So for this, I'm sharing the data with you in the chat box. So just I'm sharing the folder, which will have multiple files, and that multiple files we will be combining it into one file. Okay, so just allow me to share that. Okay, how many of you know about Power Pivot? Okay, how many of you know about Power Pivot? If you know, you can write down me. If you don't know, you can write down don't know. Okay, because we are going to cover this topic of Power Pivot today. It's an advanced topic, but I'll teach you from the very basics. Okay. So I'm just sharing the data which is required for the session. You all can download that data and you all can practice along with me. Or if you've joined through your if you have joined through mobile, then maybe you can later on do that. Okay. So just a minute. Sharing the data with you in the chat box. So just I'm sharing the folder, which will have multiple files, and that multiple files we will be combining it into one file. Okay, so just allow me to share that. Okay, so we have some 4 sales files from different region. Okay, I'm just sharing this folder in the Zoom chat. You can download this folder and then we are going to work on it. Okay, so just a minute. I've shared 4 Excel file with you all. You all can download it and let us then work on it. So here you can see that we have 4 files, which is CA sales, DE sales, FR sales, and MX sales. I'll just open one file and I'll show you what is the content in that file. So we have product ID, we have date, we have zip, we have units, we have revenue, and we have country. So there are 6 columns: product ID, date, zip code, unit, revenue, country. There are 75,000 rows data in one file, which is CA sales. CA stands for Canada here. So in the Canada, this file is coming from Canada. And if we open this file DE, it will show the same columns, but the country here is Germany. Okay. So here we have the country as Germany. And let me show you the third file. So we should call it as GE sales, not DE. So Germany is GE. I'm just changing the name to GE. And then we have the FR sales. So FR should stand for France. Let us check. So here we have France as a country. Okay. And it has 31,471, 3,14,751 rows. Okay. So you can see that the sales data is coming from different countries. And now what we are looking at, we are looking to combine the data into one Excel sheet. Okay. So we are going to combine all these data into one Excel sheet. Have you downloaded the files? Can you just confirm in the chat box? And the last one is Mexico. So we have 4 Excel files and we are going to learn how to combine them together. Are we ready to go? Shall we start? Yes. Okay. So let us start. Now what you need to do is we'll open a blank Excel file. We'll open a new workbook, a Excel sheet, a blank Excel sheet. We'll start with a blank sheet
and we will now combine this into multiple files. Okay, we will combine the multiple files into one file. Okay, so how do we do that? We will do that by using the data tab. We will click on the data tab and we will combine all the files together. Okay, what is the normal way of doing this? The normal way of doing this is copy pasting the data from each file and putting it in together by copy pasting. But copy pasting is not the solution because here we have only 4 files. There might be some other files and all these things. Okay, so what you need to do is you need to use the Power Query option over here. Okay, and then that is what I'm going to show you how to use that. Okay, so just a minute and we are going to do that. So you'll click on data tab and you will click on get data. Okay, and we will select file from file. So what we are going to do is we are going to collect the data. So here in the data tab, you have option of get data. In the get data, you can have different options. Okay. So what we are going to do is we are going to combine the data from different files and you can select a folder also. So let me select a folder because my single folder has all the files together. Okay, so I'm selecting a folder and that folder is called as a sales folder. So I will click on sales. I'll select the sales folder and now I will click on open. Now, once you do that, you will see that there is a pop-up or dialog box which has come up, which is showing us content, name, extension, date access, date modified, date created. तो ये क्या बता रहा है हमको? ये सारी फाइल्स जो है उनकी लिस्टिंग आ गई. We have got the listing of all the files. Okay, and the location also. So the all the files are there in the same folder called as sales, and we have got all these 4 files. What we want to do is we want to combine the files. हम लोग क्या करना चाहते हैं? 4 अलग अलग एक्सेल फाइल है, उसको एक साथ कंबाइन करके and we want to merge all these files together. Okay, so we can see the file name is there. Now what I'll do is you will see a button of combine and we'll select the first option, that is combine and transform data. So let us do that. How we have done this? We have done this by going to the data tab, and from the data tab I selected a folder, and in the folder I selected the folder where I had put all the 4 files. Okay, so now it has taken me to the first file and it is showing me a preview of the file. Okay, so this is the preview: product ID, date, zip, unit, revenue, and country. Now let me click on OK. Now the query is getting loaded. Now we will move to a different application called as Power Query. Okay, so I would like to understand from you all, have you ever worked with Power Query in the past? क्या आपने Power Query पे कभी काम किया है? Yes or no in the chat box, please. Those who are coming for the first time in my session, let me tell you that I have a habit of asking questions and I want to keep the session interactive. So just don't be there and don't just be there by on the listen only mode. Be participative and reply in the chat. That is how you will learn actually. Okay, so it will benefit you. If you reply in the chat box, it will benefit you because you will then build a connect with me. Else you can just watch the video on the YouTube also. If you have come to Zoom, then you should communicate. Okay, so I can see Bharat is communicating, is being active, but others also please do that. Okay, so Bharat says no. What about other? Priyanshu, Devashish, Mamta, have you used Power Query before? Priyanshu also says no. Devashish also says no. Mamta, what about you? क्या आपने कभी Power Query use किया है? We were working on Excel, now we are on Power Query. No, okay. So this is something new for you all. Okay. Are you understanding whatever we have done so far? क्या आपको समझ में आया अभी तक हमने क्या किया? We had combined the 4 files. We had selected the data tab
Data tab में we went to the folder and we selected the sales folder and then we got here. Now I'll click on, in the source name you can see only CA sales. So अभी एक ही file दिख रहा है. We will click on load more. When you click on load more, you will see the next 4 files also. CA sales, FR sales, GE and MX. Can you see all the 4 files? Are all the 4 files visible to you all? Yes or no? In the chat, please. Yes. 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 Okay, great. So now we'll click on OK. Now we will click on OK. Now, once I click on OK, you will see in the source name, all the 4 name will appear. Okay, it was already appearing when we loaded the data. So now that means what? That means that all the 4 data from the false files have been combined. Okay, now once it is combined, what we can do is we can close and load this data to our Excel. Close and load this data to our Excel. Now the query is being run and you will see that we will get the data from all the 4 files into one single sheet in a span of 30 seconds or 1 minute maximum. You will get all the 4 files data into one. It is being processed and the data is getting extracted. We will wait for this to happen. And once it is done, you will get to see, because the data is very bulky. आपने देखा था किसी में 70,000 का डेटा है, किसी में 1 lakh rows का डेटा है, किसी में 3 lakh rows का डेटा है. We are merging all these data. We are combining all the data together. Now those who have joined new, अभी अभी किसी ने अगर join किया है, तो I am just telling you again what is happening. We are learning how to combine data from multiple files. तो हमारे पास 4 Excel फाइल है, 4 अलग अलग फाइल्स है हमारे पास, 4 अलग अलग एक्सेल फाइल है, और हम चारों एक्सेल फाइल से क्या कर रहे हैं, डेटा को कंबाइन कर रहे हैं एक एक्सेल के अंदर. और ये करने के लिए हमने क्या किया, हम डेटा टैब पे गए. डेटा टैब में हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम फोल्डर एंड वी हैड सेलेक्टेड द फोल्डर इन विच वी हैड द फाइल. Now those who have joined now, I'm sharing the files again in the chat. You can download it. Okay, if you want to work along with me, if you want to learn. Otherwise, I will be sharing the link to download the files in my YouTube channel. This video is live on YouTube as well. So those who would be watching it afterwards, you will get a link to download the data in the comment section. You can download it from there. Now this query is running. It is taking some time. Yeah, but it depends on actually how many rows you have. See here, you can see the running background. Okay, now it is done. Guys, the thing is done. And you can see here 8,41,147 rows loaded. ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि क्या चारों कंट्री का डेटा हमारे साथ आ गया है क्या. ठीक है, बिकॉज इन द डेटा वी हैड 4 कंट्रीज, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको एंड विच वाज द फोर्थ वन, France. Canada, France, Germany and Mexico. Now we want to check whether we have got all the data or not. So see, you click on this source name and I'm just zooming it to show you that we have got all the 4 files together. Sales, FRG, MX. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने कैसे किया, ये हमने डेटा को मर्ज करके किया है. Now we don't require this source name, so we can delete this column. We can delete this column. Now we have a combined data. Okay, and we will save this file and we'll say combined sales data. We will say combined sales data and we'll put it in the, we'll save it on the desktop. Now, any questions, anyone? Have you understood? If you have understood, you can write on U in the chat box. Those who have come new,
Okay, I will just again quickly show you. Have you understood? I want people to react. Okay, you have to be participative in the chat box if you are serious about learning. Okay, so what I did is I went to the data tab. Data tab में हमने क्या get data. Get data में we selected from file and we selected a folder. And in that folder, I had selected the folder which had my different files. Now, what is the catch over here? The catch is all the files that you want to combine should have the same headings. अगर उनका heading same नहीं रहा तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है? When you click on sales, the folder, when you select the folder, you will get this option. And then you can click on combine data and you will get the data combined. So ये चारों फाइल का डेटा एक साथ आ गया. Sir, could you please हाँ, repeat yes, sir. it? You have put a question, if the headers are in all the files, then why don't we remove headers by filtering the row? Query has auto remove the headers. Yes. So the query will automatically remove the header. You will get only one header placed. और आपको हर एक जैसे कनाडा के बाद if we talk then there is a France. तो जब ये मर्ज हुआ है तो कंबाइन हो गया. The headings are not getting repeated. ठीक है, headings are not getting repeated. That is already taken care of. Now, what is the benefit of this? We can create a combined table for all the 4 countries. ठीक है, अभी मान लीजिए हमारे को अगर डेटा कंबाइन नहीं करना है and we want to do the same process. Now let us create a pivot table. Okay, how many of you know how to create a pivot table in Excel? कितने लोगों को pivot table बनाना आता है? Yes or no in the chat. Not much. Bharat says not much. Okay. See, you all are here for learning. Okay. So there is no point in hesitating in answering anything or ऐसा नहीं है because not no one of us knows each other. हम लोग किसी को जानते नहीं है. तो आप लोग अगर सेशन में आए तो सीखने के लिए आए हैं. ठीक है. तो pivot table is a very important tool in Excel. तो ये आपको आना बहुत जरूरी है. और इससे बहुत ये why we use pivot table? We use the pivot table to summarize the data. Now how we can summarize this data? Now there are multiple things that I would like to know. ये जो डेटा है 8 लाख रोज का डेटा है 8,41,000. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच कंट्री. मान लीजिए आपके बॉस आपसे पूछता है या आप डेटा पे काम कर रहे हैं, आपको ये पता लगाना है कि कितना कंट्री में कितना यूनिट सेल हुआ है और कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और किस प्रोडक्ट वाइज हमें देखना है या ईयर वाइज देखना है. हाउ वी कैन डू दैट? कैसे करेंगे? मुझे इस टेबल का इस डेटा को समराइज करना है. हाउ कैन आई डू दैट? टेल मी. How can we summarize this data? So the only option to do that is to create a pivot table. So how do we create a pivot table? We'll go to Home tab, Insert में जाएंगे, Pivot table select करेंगे from Table and Range, and it will give a pop-up और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने ये सेल्स, इस जो टेबल है इसका नाम ही सेल्स टेबल है. इसका नाम जो है टेबल का, इट्स द नेम ऑफ द टेबल इज सेल्स. So it is selecting the sales table and we want to create a new worksheet. The pivot table in a new worksheet, we'll click on OK. जैसे ही आप OK प्रेस करेंगे, you will get to this sheet. There is a new sheet will be inserted. Yeah, second option we can do sum if also. Yeah, that I will show you. वो भी कर सकते हैं हम. पिवट टेबल भी ऑप्शन है और फॉर्मूलाज भी ऑप्शन है, बट उसके लिए फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आप लोग. फॉर्मूला यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. दैट आल्सो वी विल कवर. नाउ सी हियर इज वाज द डेटा. हमारा डेटा जो था वो इस शीट में था. हमने एक नया शीट इंसर्ट किया पिवट टेबल का एंड दिस इज द न्यू शीट. नाउ दोस who don't know what is pivot table and don't have never used pivot table, let me give you a brief about it. जो हमारा डेटा होता है ना, जब भी हम पिवट टेबल बनाएंगे तो आपको ऐसा एक विंडो दिखाई देगा. ठीक है, इन दैट विंडो यू गेट प्रोडक्ट आईडी, डेट, जिप, यूनिट्स, रेवेन्यू, कंट्री. दीज आर द कॉलम हेडिंग्स. ये सब कॉलम हेडिंग्स हैं. ठीक है,
और इन कॉलम हेडिंग्स को हमें चार जगह पर डालना है, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। वैल्यूज में आपको एक सिग्मा दिखेगा, ठीक है, यू विल गेट द सिग्मा बटन ओवर हियर, आइकन ओवर हियर। हियर यू सी रोज, रोज आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स आर ऑलवेज वर्टिकल। तो इसको याद रखने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को या अपने सेशंस में बताता हूँ कि एचआर और सीवी, ये दो शब्द आप याद रखिए, ठीक है। एचआर को हम क्या देते हैं, अपनी सीवी देते हैं। एचआर को वी गिव आर सीवी। So HR here stands for horizontal rows, horizontal rows। तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो रो नंबर 2 है, ठीक है। और अभी एक वर्ड सी जो है वो कॉलम है, एंड CV मीन्स व्हाट, कॉलम्स आर वर्टिकल, सो कॉलम्स आर वर्टिकल। सो दिस इज माय लाइक इन्वेंशन, ये मैंने ढूंढा है, निकाला है कि HRCV करके हम इसको याद रख सकते हैं इजीली। एंड यू कैन नेवर गेट कंफ्यूज अबाउट दिस, बिकॉज मेनी पीपल गेट कंफ्यूज, क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है ना। तो ये HRCV से आप याद रख सकते हैं। नाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले तो उसका लेआउट चेंज करके हम इसको इस तरीके से बना देंगे, सो इट बिकम्स गुड टू सी। ठीक है, अब आप देखेंगे, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं। यहाँ पर we have all the column IDs, we have all the column headings, and we have the filters over here. Now what we'll do is the revenue, we'll put it in the values. Now as we drag and drop the revenue into values, here you will see a single figure. ये नंबर आपको बता रहा है कि पूरा जो डेटा है उसमें टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। नाउ when you put the country into rows, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, यू पुट द कंट्री इनटू रोज। नाउ व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई दे रहा है टेबल में अब, ठीक है, बताइए, आप ही बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू सी ऑन द टेबल नाउ। पहले हमको एक फिगर दिखाई दे रहा था, वी गॉट टू सी ओनली वन फिगर। नाउ वी आर सीइंग द कंट्री वाइज सेल्स। यस, वी हैव गॉट कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, ठीक है। तो हर एक कंट्री का क्या सेल है वो हमें अब नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी हैव पुट द कंट्री इनटू the rows. Now suppose I want to see the unit sold also. I can put the unit sold in the next column which is near to revenue. तो अब आपको sum of revenue भी दिखा रहा है, sum of units भी दिखा रहा है. We can see both the things, okay? Sum of units and sum of revenue. Now suppose you want to see the product wise sales. You want to see the product wise sales. So what we can do is we can put the product ID into what? Rows below the country. अगर आप कंट्री के नीचे प्रोडक्ट आईडी रखते हैं तो क्या होगा, हर एक कंट्री में क्या प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी और वैल्यू में बिका है ये दिखाई देगा, बट इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू पुट इट इन द रो और कॉलम। अगर आप कॉलम में भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा बड़ा टेबल हो जाएगा। वी वांट टू क्रिएट अ समरी, ओके। तो जब भी आपके पास खूब बड़ा ज्यादा डेटा हो तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू पुट एनी फील्ड विच इज लाइक हैविंग अ ह्यूज डेटा into either row and column. What you can do is you can put this into a filter, ठीक है, आप उसको फिल्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, we'll put some more rows into the Excel. Now अब हम फिल्टर में प्रोडक्ट आईडी को रख देते हैं, तो प्रोडक्ट आईडी विल पुट इट इन द फिल्टर। Let me put this here. I'm putting the product ID into filter, ठीक है। अभी क्या होगा, सपोज आई सेलेक्ट, आई वांट टू सी व्हाट इज द प्रोडक्ट आईडी 4 का सेल्स, तो 4 मैंने सेलेक्ट करा तो ये सब नंबर चेंज हो जाएगा, इट विल गिव मी ओनली द 4 प्रोडक्ट आईडी का टोटल सेल्स एंड द सेल्स बाय कंट्री एंड द सेल्स इन यूनिट। नाउ सपोज आई वांट टू सी द ईयर वाइज सेल्स, आई कैन पुट द ईयर इनटू कॉलम्स। तो अभी ये डेट दिखा रहा है, ठीक है, आई डोंट वांट डेट वाइज, आई वांट ईयर वाइज, ठीक है। तो इट इज शोइंग मी डिफरेंट डेट्स for each country. Okay. So you can extend the year from the date column and that you can put in the as per year also. Okay. और आपका जो डेट है वो एज अ डेट फॉर्मेटेड नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है। व्हाट वी कैन डू इज वी विल सेलेक्ट दिस कॉलम, इस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए जनरल लिखा है, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे शॉर्ट डेट,
you will convert this into a date. Okay, and now you will come here and you will refresh your pivot table. Okay, pivot table को हम refresh करेंगे. So we will go to this insert option and you will get an option to refresh. किधर गया? Pivot table analyze and there is option of refresh. So what will happen after refresh? अभी आपको दिखाई देगा. Now, if I put the date into the column, अभी भी date ही आ रहा है. Right click and refresh. Yeah, that is also possible. नहीं तो वो उसमें भी आता है. यहाँ से भी हम कर सकते हैं. Correct. But what I wanted is that the date should get converted into month, year और वो automatically हो जाता है. लेकिन वो हुआ नहीं अभी भी. If I put the date into rows, it is still showing me this. This gets separated when you do that. Anyways, so this is pivot table, and you can create a pivot chart also. Okay, correct. Now we will create a chart. So how do we create a chart? We'll go to insert again and recommended charts, and let me create a pie chart. Now this pie chart is showing me the revenue by each country, the revenue received from each country. Okay. If you want, you can increase the font size for this headers so that you can see it properly. Okay. Yeah. So now these are visible. What country, what color is representing which country. Secondly, you can also choose any other option from here. Okay. 3D chart or maybe something. This is showing us the profit percentage. Let me increase the size. You can go to the data label and you can increase the data label font from here also. More options and category name. And here we can increase this. So now the best thing I will show you now. Okay. So it is showing me the revenue for country. We don't want this now. This is fine. So this chart is showing me how much we are getting the contribution for which country. Okay, we will remove all these things which are not required. So from the chart, fine. Now the best thing, what we'll do is we'll insert a slicer in the pivot table. So we will go to insert slicer and we will select the product ID and the date into the slicer or maybe the product ID into slicer and click on OK. Now, when I do that, I'll get a list of all the product IDs. I'll get a long list, okay, and I can make it into 2 columns. So I'll say 2 columns, 3 columns, 4 columns, whatever. Okay. Now, suppose I select any number, let's say product ID 30. You will see that the chart is changing. The pie chart is changing. When I click on any number, it has become a dynamic chart now. Can you see that? So the product number 42 is sold only in Germany, in no other country. Same with 40, 54, all these things. They sold only in 3 countries. Okay, so this is how you can create a dynamic report into Excel. Now we can insert a timeline also. Timeline means a filter for date. So what we'll do is we'll go to insert timeline, analyze pivot table, insert timeline, and okay, the field is not formatted as date. So the same problem. So what we will do is
So this types of errors always come into Excel. We should know how to deal with these kind of errors. तो अभी क्या हो रहा है कि the date is not formatted as a date. Okay. So we are going to create the date into a date. We are going to format the date into a date format. So what we'll do is we'll split the column into three. Now, again, a question to everyone. Let me test your Excel skills. Okay. And you have to like give me an answer. अभी हमारे पास डेट है जिसमें पहला मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है. आई वांट टू स्प्लिट द डेट इनटू थ्री पार्ट्स. डे का अलग कॉलम बन जाए, मंथ का अलग बन जाए और ईयर का अलग बन जाए. कैसे होगा ये काम? हाउ वुड यू डू इट? व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दिस? देवाशीष, हाउ कैन वी स्प्लिट द डेट इनटू डे? Uh, so we can use the date function directly for day, month, and year. We can use the date function. Okay, so in the date function wants the year, month and day. So use the date function. We want the things to be separate column. तो वो सेपरेट कैसे करेंगे? दैट्स इज व्हाट आई एम आस्किंग. We are going to create a new date column using the date function. We will create a new date. But before I can create the new date, I have to split the date. कैसे करना है वो? Anyone? Now there are multiple ways of doing this. Okay. You can use text to columns also. The basic thing that people do is using text to column. Now, what is text to column? But the only problem there is that in some of the places you have the hash, the sorry, the front slash or the backslash. Okay, and here you have a hyphen. So first we'll have to change that hyphen into a backslash. So what I'll do is first I'll replace this hyphen, Control H, replace this hyphen with this and replace. So once this is done, then you can split it. Okay, using the text to column, we'll split this data. The data is huge actually. That is why it is taking so much time. I had selected a wrong data set because it will take time to process this. Okay, but by the time it is taking time, we can discuss about like what we are doing. Okay, so we are splitting the date so that we can get the date in order. जब डेट फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम एक टाइमलाइन बनाएंगे और टाइमलाइन पे हम उस जिस मंथ का सेल्स देखना चाहते हैं, यू विल बी एबल टू सी द सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. Okay, so that is also the problem. So how do we solve this, Harshil? फॉर्मूला अलग अलग ही लगाना पड़ेगा. जो पहले कंपनी वाइज है तो ऐसे आई थिंक कंट्री वाइज लगाना पड़ेगा. हाँ, समझ गया मैं. लेकिन ठीक है, हम सेपरेट तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, अभी आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम. इसको क्लोज करते हैं. So, but text to column uh, will only split it as number, हाँ, right? then you can use that date formula to place them together ना. वो जो डेट का फंक्शन है, टू यूज द डेट फंक्शन इट रिक्वायर्स थ्री थिंग्स: मंथ, डे एंड ईयर. तो हम हर एक कॉलम से सिलेक्ट करेंगे तो वो कंबाइन करके डेट बना देगा ना उससे. गेटिंग इट? सर डायरेक्टली टेक्स्ट टू कॉलम में जो ऑप्शन है उससे भी हो जाएगा. हाँ, टेक्स्ट टू कॉलम में डायरेक्टली ऑप्शन आता है डेट का, उससे. उससे हो जाएगा. एक मिनट देख लेते हैं. ठीक है, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया बीच में. सो आई सेलेक्ट सम ऑफ द रोज एंड लेट अस सी. कुछ 10 रोज ले लेते हैं और
we'll go to data tab. In the data tab we'll go to text to column, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलिमिटेड, ये रखते हैं इसको, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन कहाँ आ रहा है, डेट का ऑप्शन सर आगे आएगा। अभी यहाँ पे, तो वी हैव टू सिलेक्ट द नहीं, स्लैश। कुछ भी नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, स्लेश नहीं करना है सर, कुछ कुछ नहीं भी करना, मत रखो, टैब भी अनसेलेक्ट कर दो। अनसेलेक्ट कर देते हैं, ओके। विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब अच्छा, आएगा डेट, डेट। एंड द फॉर्मेट शुड बी MDY। MD, MDY, okay. First one, month, date, and year, okay. Finish. ठीक है. So now it is converted into a date, correct. But can it be applied to all the other? एक बार करके देखते हैं. Text to column. Next, we will check, uncheck everything, and इसको date format में करना है. MDY, finish. Okay. Now once this is done, okay, let us come back to our pivot table first. अभी प्रॉब्लम है इस डेटा में, बट लेकिन फिर भी हम आते हैं. Let us come to our pivot table. Now what we'll do is we'll refresh this. Refresh. Okay, now we'll go to the field list, show field list. And now if you see this date, now we have got the year. Now we have got the proper format of the date. Okay. So now we can insert a timeline. Okay. So I can remove this date. We'll put the timeline. We'll insert a timeline. And in the timeline, we'll select date. This is our timeline. So it is showing me the months and the year. So if I select any particular month, it will show me the date data for that particular month. ये काफी लंबा डेटा 2019-99 से लेके we have so many years data. So you can select the time period that whatever you want to see, and accordingly the selection would be there. Okay, so suppose I select only 99 to 2000, then it is showing me only that year data. If I select March, May, any particular month, it will show me that. Okay, so today what we learned how to combine the data into from different sources. Then once you combine, how do you create a summary of the data? How do you summarize the data? And after summary, how you can create a interactive report by introducing the slicer and the timeline. Now, one more thing I wanted to show, but that we'll do tomorrow, that how we can combine the data without actually creating a combined file. Okay, so for that, you will require the Power Pivot option that we will do tomorrow. Okay, so any questions, anyone? Priyanshu, आपको समझ में आया how we did what we did? Pooja, I think you had joined late, so have you Sir, understood? sir, please repeat the merging process again. What? Repeat what? Merging process again. Sir, हाँ हाँ. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो फिर what we need to do is we will create a new file. Okay. And see, when you open an Excel file, you will go to data tab. Data tab में जाएंगे आप, और वहां पे एक ऑप्शन होता है गेट डेटा. तो देर आर वेरियस सोर्सेज जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अजूर, ऑल दीज थिंग्स. हमारे पास डेटा जो है वो एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है. सो वी विल सेलेक्ट फ्रॉम फोल्डर.
और फोल्डर जो था, आई हैव पुट द फोल्डर ऑन माय डेस्कटॉप. इन माय डेस्कटॉप देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज सेल्स. इस सेल्स फोल्डर के अंदर अंदर 4 एक्सेल फाइल है. ठीक है, यू कैन सी दैट इट इज शोइंग ओवर हियर. आई एम जूमिंग इन. इस फोल्डर पे जैसे आप होवर करेंगे तो आपको दिख रहा है सी ए सेल्स, एफ आर सेल्स, जी सेल्स एंड एम एक्स सेल्स. देयर आर 4 फाइल्स इन दिस फोल्डर. You will select this folder and click on open. आप जैसे ही ये काम करेंगे दिस विंडो विल कम, ओके, विच इज कॉल्ड एज द नेविगेटर. ठीक है, ये आपको दिखाएगा कि 4 फाइल्स हैं, आप करना क्या चाहते हैं. अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कंबाइन दैम. ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली कंबाइन एंड लोड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं. कंबाइन एंड लोड. नॉट अ प्रॉब्लम पूछो. सो कंबाइन एंड लोड. ठीक है, अभी देखिए कंबाइन एंड लोड करा, वापस ये फाइल आया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. दिस जस्ट शोइंग अ प्रीव्यू. और ओके करते हैं. दीज आर CSV फाइल्स एक्चुअली. सो नाउ यू विल सी कि जो चारों फाइल का डेटा है वो एक ही फाइल में मर्ज हो जाएगा. इट्स अ ह्यूज डेटाबेस एक्चुअली, तो टाइम ले रहा है थोड़ा सा. यू विल सी यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, एंड दिस क्वेरी इज बीइंग रन. CSV कैन बी मर्ज थ्रू पिवट बट दैट इज डन वर्चुअली. वो डेटा मर्ज करके नहीं आता, वो वर्चुअली आपको सिर्फ टेबल कनेक्शन हो जाएगा. लेकिन हाँ, CSV के साथ भी कर सकते हैं, मैंने किया है. दैट इज पॉसिबल. Shankar, may I know from which group you have come from, like to the session? You can put it in the chat because I put this link in multiple groups. I want to understand like where people have joining from. So Devashish, now you will see the data will flow और ये सारा डेटा कंबाइन हो जाएगा. प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास हेडिंग्स अलग अलग हो या कॉलम्स अलग अलग हो, तो फिर अलग तरह के ज्वाइंस करने होते हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए एडवांस चीजें हमें देखनी पड़ेगी, तब जाके हम वैसी वाली फाइल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं जहाँ पे कि कॉलम सेम लेंथ के ना हो या डिफरेंट हो. वी कैन डू दैट. सर इसमें जो फाइल कंबाइन हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट फाइल, देन हाँ. उसके नीचे ही सेकंड फाइल आएगा ना सर? क्या क्या. मतलब जैसे फर्स्ट फाइल का रो खत्म हुआ, हाँ हाँ. देन सेकंड वन विल स्टार्ट. या जैसे ही फर्स्ट फाइल का कंबाइन होगा फिर वो नेक्स्ट फाइल का चालू करेगा, फिर नेक्स्ट फाइल कंबाइन होगा, फिर नेक्स्ट चालू होगा. देखिए अभी ये डेटा आ गया है. तो सबसे पहला मेरा CA सेल्स था. तो CA सेल्स के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको FR सेल्स, GE सेल्स, MX, ये एक सीरियल उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले रहा है. तो पहले कनाडा आया, फिर फ्रांस आया, फिर जर्मनी आया, फिर मैक्सिको आया. दिस इज हाउ इट इज अरेंज द डेटा. ठीक है, तो कनाडा के बाद आप देखेंगे फ्रांस होगा. फ्रांस के बाद यू विल सी जर्मनी, और जर्मनी के बाद आपको मैक्सिको दिखेगा. तो अगर हमारा डेटा क्लीन है, सब कुछ है, तो हम डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन. ईच फाइल वेयर विथ डिफरेंट हेडिंग, तो हमें वो हेडिंग सारे रो में से हटाना पड़ता. नहीं, डिफरेंट हेडिंग होता तो. यस. क्वेश्चन क्या है. मतलब सर अभी में जैसे सी एस सेल्स के लिए सोर्स नेम, देन प्रोडक्ट आईडी, डेट, देन जो एफ आर सेल्स है हम्म. उसके लिए हेडिंग अलग होता. तो हम्म. वो हेडिंग ही रिपीट होती, वही हेडिंग आता ना फिर उसके बाद. मतलब आप कह रहे हैं कि अगर फाइल का अरेंजमेंट अलग अलग होता तो क्या होता. नहीं मतलब जैसे सी ए सेल्स का अभी सर
रो खत्म हो गया, so all the data until row 100. करेक्ट, ठीक तो है। जब तो सर जब नेक्स्ट FR सेल से स्टार्टिंग, तो हम्म। उसका हेडिंग भी आएगा ना फिर, नहीं, उसका जो हेडिंग फर्स्ट नहीं नोड है। आएगा, उसका हेडिंग नहीं आएगा। हेडिंग इज कंबाइंड ना, देखो हेडिंग टेबल का तो एक ही हेडिंग रहेगा ना, द हेडिंग इज सेम। सो इट हैज रिमूव द हेडिंग्स, कॉमन हेडिंग्स हटा दिया है। आर यू गेटिंग इट? ओके सर, ये सेम है इसीलिए हटा है या सेम है बाई? इसलिए हटा दिया है, सेम है इसलिए हट गया है। ओके ओके। सेम हेडिंग, अगर सेम हेडिंग नहीं होता तो वो कंबाइन भी नहीं कर पाता, बिकॉज द हेडिंग्स वर सेम, इट कुड कंबाइन द डेटा। So guys, we'll stop here for the day, and tomorrow again the session will be from 9 to 10, and I'm going to cover how to combine different Excel files with different headings. कल का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा. This is a regular series that is going to be there from 9 to 10. So you can invite your friends and you can join. If you want to learn Excel from basic to advanced, then you can join my course, which is there, which is running. There is a recorded course and there is a live batch also that we can do. But for this week, I'm sharing these things complimentary for all. Okay. And then from June, I'll be going to start a fresh batch for Excel as well as Power BI. Okay. So wishing you all good night and see you tomorrow at 9 p.m. Okay, if you like this session, you can share it with your friends and your colleagues, and they can also get benefited by attending the session live.